Assalamu alaikum dear students, welcome to your English class. Open your ORC book, story 4, page number 30. Here is story 4, Diba's doll. Let's read the story. Well done, Diba, we are so proud of you. Diba sat up in bed and rubbed her sleepy eyes. The room was full of people. Mom and Dad were there, and so was her sister Neha and her brother Rafi, and even Auntie Anita. It was 6 o'clock in the morning on Sunday. Deepa did not have to go to school, so there was no need to rise at 6. But Deepa was not annoyed. Yesterday she had been given some good news. She had come first in her class. She was now delighted to be up. The family had promised her some presents, and here they were. Wake up, sleepyhead, shouted Neha, jumping up and down at the bottom of her bed. Rafi stepped forward and handed her a large parcel. Well done, Diba, he said, and nodded and added, open this one first. I wrapped it myself. What is it? Asked Deepa excitedly, taking the parcel from him. Open it and find out, said Rafe, and before you say anything, I bought it with my own money. I knew you would come first, so I have been saving up for months and months and months. So, dear students, she is Diba, and he is her brother Rafi, and she is her mom, dad, नेहा एंड आंटी अनीता. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये दीबा है. दीबा क्लास में फर्स्ट आई है, तो सब लोग उसे सुबह सुबह गिफ्ट्स देने आए हैं, और राफी उसे बड़ा पार्सल दे रहा है और कह रहा है कि मुझे पता था कि तुम फर्स्ट आओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सेविंग की और तुम्हारे लिए अपने पैसों से गिफ्ट ख़रीदा और मैंने ख़ुद पैक किया है. और नेहा भी बहुत खुश हो रही है. सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि दीबा जो है वो फर्स्ट आई है. Yes, yes, interrupted Red Mum, and I know how much you saved. Don't tell Diba how much you owe the bank. But the Rafi, I did save a lot. Didn't I? I only borrowed a little bit from you. Diba was not listening. She was busy unwrapping the parcel. A doll! She exclaimed when the paper was off. How lovely! Thank you, Rafe. It's not ordinary doll, said Rafe quickly, just in case she thought it was. It works on batteries and it talks. Let me show you how it. Let her do it on her own, Rafe said, Mom, gently holding Rafe back. It's her big day and her present, so let her make it work. I was only going to help her with the batteries, complained Rafe. It won't work without them, and putting them in is complicated. I'm sure she will manage, said Dad, handing her a small pack of batteries. After all, she has proved that she is the brightest girl. राफ़े ने कहा है कि राफ़े कह रहा है कि मैं दीबा की हेल्प करूं ये पैकेट खोलने में. राफ़े दीबा को एक पैकेट देता है, उसमें एक डॉल होती है और दीबा कहती है वाह इट्स अ डॉल. दीबा को वो डॉल बहुत पसंद आती है. फिर राफ़े कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा. इसमें बैटरीज डलती हैं और ये बोलती भी है. ये इट्स नॉट ऑर्डनरी डॉल मीन्स ये कोई आम डॉल नहीं है, ये बोलती है, ये इसमें बैटरीज पड़ती हैं. ठीक है, तो डैड कहते हैं कि दीबा माशाल्लाह बहुत होशियार है और वो बहुत अक्लमंद है और वो फर्स्ट आई है और मुझे यकीन है कि वो पैकेट खुद खोलेगी. राफे तुम इसे डिस्टर्ब मत करो. Come to the next page. Deepa tore the packet open, removed the back cover of the doll and fitted the batteries in no time. दीपा ने पैकेट खोला और उसमें जल्दी से बैटरीज डाल दी. How do you make it talk? she asked. फिर वो बोली अब ये कैसे बोलेगी, अब ये डॉल किस तरह बोलती है.
Rafe कहता है, see, I told you, said Rafe smiling smugly at his parents. She does need help after all, and big brothers are here to do just that. मुझे पता था कि दीबा को हेल्प की ज़रूरत होती है, आखिरकार बड़े भाई जो होते हैं हेल्प करने के लिए. And before he could be stopped, Rafe pressed a tiny button on the side of the doll. Now say something, Diva, he said. He said, give the doll an instructions like attack or fire. अब वो कहता है कि दीवा डॉल को कहो कि अटैक, फायर, वो डॉल वही करेगी. So, dear students, we will read the remaining story in the other part of the video. So, here is the Rafe is showing doll to the Diba. What a beautiful doll. Okay, dear students, come to the book page number 38 and exercise B. Reference the context. Read these lines from the story, then answer the questions. Dear students, here is the line given. She does need help after all. Here we have given this line. Now we have to find first that who said these lines. ये जो हमें लाइन दी गई है एक्सरसाइज बी में, शी डज़ नीड हेल्प, मतलब उसे हेल्प की ज़रूरत है. अब ये लाइन पहले हमने इसके बाद ये लाइन हमें फाइंड करनी है, उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. हु सेड दीज वर्ड्स टू होम, ये किसने कहा और किससे कहा. व्हाट वाज द स्पीकर्स फीलिंग एट द टाइम एंड वाई. व्हाट डिड द स्पीकर डू इमीडिएटली आफ्टर दिस. यहाँ पे स्पीकर मतलब जिसने ये लाइंस कही हैं, ये वर्ड्स कहे हैं, उसकी क्या फीलिंग थी और उसके बाद फ़ौरन से उसने क्या काम किया. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दीज लाइंस इन द टेक्स्ट. Dear students, read the previous book pages and find out where is these words written. Here is these words written on book page 30. She does need help after all, said Rafe, smiling smugly at his parents. So, dear students, the answer is Rafe said these words to his parents. So, dear students, now you will write what was the speaker's feeling at this time and what did the speaker do immediately. अब आपको ये लिखना है कि हमें पता चल गया कि ये लाइंस राफ़े ने कही हैं. अब राफ़े की क्या फीलिंग्स थी और राफ़े ने उसके बाद एकदम से क्या किया, इसके बारे में आपको अब बी के बारे में आपको दो तीन लाइंस लिखनी है और सी के बारे में भी आपको 2-3 लाइंस लिखनी है. मतलब आंसर ए मैंने लिख दिया है, अब आंसर बी और सी आप लोग लिखेंगे होमवर्क में. सो इट इज़ योर होमवर्क. राइट द रेफरेंस आंसर ऑफ द रेफरेंस. ओके, बी एंड सी. ए मैंने लिख लिया है, आपको बी और सी लिखना है कि राफ़े की उस टाइम क्या फीलिंग थी और राफ़े ने उसके बाद एकदम से क्या किया. इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. इसको हम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट कहते हैं. अब हमने वो वर्ड्स फाइंड कर लिया स्टोरी में, ठीक है. अब इसके बाद आपको डिफरेंट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अंडरलाइन करने हैं. जो बुक पेजेस में आपको वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं. Reading of book page 30 and 31 and underline the difficult words, okay, and complete the reference. I'll be back with the next video. Till then, Allah Hafiz, take care.